Moving on to Pathri near Haridwar, where faith blossoms once again, carrying forward an ancient tradition that unites hearts beyond the bounds of religion, caste or creed. This is the 856th annual Urs of the revered Sufi saint Shah Mohammad Shah, lovingly known as Katha Peer Baba. The air resonates with soulful qawwalis and the quiet strength of unity. From security to sanitation, medical aid to clean water, every arrangement is made to ensure a safe and dignified experience for all devotees. This isn't just a religious gathering, it's a living example of oneness. At the Dargah of Katha Peer Baba, faith builds bridges, not boundaries. Take a look. In the quiet expanse of Pathri near Haridwar, where the air carries the scent of devotion and the rhythm of timeless faith, a centuries-old tradition breathes once again. The 856th Urs of Sufi saint Shah Mohammad Shah, known as Katha Peer Baba, is more than a religious event. It's a vibrant symbol of communal harmony. People of all faiths gather from across regions, offering flowers, chadars and jaggery, united in their prayers for peace, healing and shared spiritual hope. Devotees believe that offering a simple rolling pin or a humble broom at the Dargah leads to swift fulfillment of wishes, a gesture of faith that carries profound spiritual power. और जो मन्नत हम मांगते हैं वो पूरी होती है। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ आते थे, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे जाना, प्रसाद चढ़ाना, यहाँ पे बेलनी चढ़ती है, प्रसाद में झाड़ू चढ़ती है और जो हम मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। बाबा शाह मोहम्मद शाह की ये दरगाह है। यहाँ पर ये पथरी के जंगलों के बीच स्थित है और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में एक बार यहाँ पर उर्स बढ़ता है और उर्स में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। मैं कहता हूँ कि लाखों की संख्या में आते हैं। Every year, lakhs of devotees gather here, yet never a conflict, only silken threads of harmony woven through generations. It's not just a spiritual space, it's a sanctuary of dignity and order. This sacred dargah knows no barriers, no caste, no creed, no division, only faith and a profound sense of shared humanity. ये उत्साह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं यहाँ पे और सब धर्मों को मानने वाले आते हैं और जो ये यहाँ पे आके भाईचारा कायम करते हैं। और फिर दूसरी बात ये यहाँ पे सबकी मुरादें पूरी होती हैं। In an era where lines divide and fears rise, the Urs of Katha Peer Baba shines bright as a beacon of unity, a sacred celebration of India's plural soul, and a reminder that faith, when shared with love, knows no boundaries. As the soulful echoes of prayer fade into the Pathri breeze, the legacy of Katha Peer Baba lives on, binding hearts, generations and communities. The Urs is not just a ritual, but a reflection of India's spiritual fabric, where devotion dissolves division and unity blossoms through the quiet power of shared belief.